good morning friends, good morning everyone. This is Evewin Lakra. So today is 4th Jan 2025. Again here I am at our terrace. Today just want to show you two of my brand new product which I have purchased recently. This is the steel glass big size and this is the steel Tiffin. And today I also have one more thing to do. This is the orange peel which I have to put on top of our terrace garden plant, and this is the shredded parts of methi or fenugreek. Let me show you. Methi greens or fenugreek greens. I've cut the leaf of methi and the stem of methi, hard stem of methi, finely chopped for putting it over the top layer of our terrace pots. So that it will have some nutrients boost, and the plants which I am growing on those pots will benefit from it. Okay. I'll show you the steel tiffin and steel glass after some time because I have to hang the cloths, wet cloths. Today we are also celebrating the laundry day. गाइस यही दो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है रिसेंटली. एक है हेजल ब्रांड का जंबो ग्लास. ये लस्सी ग्लास भी इसको बोल सकते हैं, या गांव या पिंड सब में लस्सी पिया जाता है. इतना बड़ा वाला ग्लास है. 750 ml इसका कैपेसिटी है. कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास, स्टील ग्लास, इज 750 ml मिलीलीटर. नीचे में इसका हेजल ब्रांडिंग है और अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा है. और एक प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, ये बिग बास्केट बीबी होम ब्रांड का. बीबी होम लिखा है ना पीछे, इसका ब्रांडिंग पीछे है. इसका ये पूरी डब्बा इसको बोलते हैं. ये भी 750 ml इसकी कैपेसिटी है. अच्छा से पूरी से बैठ जाएगा इसमें. ये थोड़ा बड़ा साइज दिखाता हूँ. तो प्राइसिंग बता देता हूँ दोनों प्रोडक्ट का. प्राइस मैंने पे किया है, ये पूरी डब्बा का स्टील का है, इसका 219 रुपीज़ मैंने पे किया है. और हाँ, बिग बास्केट से ख़रीदा था, अभी कल ही डिलीवर हुआ. और एक प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा, ये हेज़ल ब्रांड का जंबो स्टील ग्लास, लस्सी ग्लास. इसका MRP असली में 500 कुछ है, यहाँ लिखा होगा, दिखाता हूँ. MRP है 579. 2 ग्लास का सेट है. मैंने पे किया है 250 अप्रॉक्स, है ना. 250 दिया है 2 ग्लास का, तो 125 रुपीज़ एक ग्लास का पड़ा. बड़ा साइज़ है, बहुत अच्छा है. लेकिन अभी हमको लगता है आउट ऑफ स्टॉक हो गया वो प्रोडक्ट. मैं ही लास्ट कस्टमर था इसका. अच्छा, तो ये दो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है रिसेंटली. गाइस हम लोग ऑरेंज भी ले आए हैं टेरेस में खाने के लिए. यम्मी हेल्दी टेस्टी ऑरेंज. तो ऑरेंज खा लेने के बाद अब मेरे पास ऑरेंज पील्स जो कि कटिंग करके आधा लाए थे और आधा अभी काट दिए छोटे छोटे ऐसे हाथ से. और ये है मेथी फेनुग्रीक का छोटे छोटे किया हुआ लीफ ग्रीन. दोनों को कंपोस्ट बनाने के लिए डाल देंगे. चलिए, इट्स टाइम टू पुट माय प्री कंपोस्ट और ऑरेंज पील्स ऑन आवर टेरेस गार्डन पॉट्स, कार्डबोर्ड बॉक्स एंड पॉट्स.
सो गाइस मैंने ऑरेंज पील्स और मेथी और फेनुग्रीक पील्स नहीं, उसका लीफ का कटिंग्स को स्मॉल स्मॉल करके यहाँ पे प्री कॉम्पोस्ट बनने के लिए लगा दिया है, डाल दिया है, और यहाँ पे भी डाल दिया। और ये तो अच्छा से हो रहा है, यहाँ पे धनिया भी हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। आज का यही प्रोजेक्ट सब था। उसके बाद अब घर जाके नया प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। अब ये जो रोज़ का बर्ड है, तो हाइब्रिड टी नहीं लग रहा है, ये तो लोरी बुंडा प्लांट में हाइब्रिड टी ग्राफ्ट किया है कि क्या किया है, इतना मोटा है इसका स्टेम। थोड़ा से स्प्रिंग ऑनियंस और लहसुन और गार्लिक ग्रीन्स को हार्वेस्ट कर लिया है आज मैंने। कुछ स्टर फ्राई वेजीज बना दूंगा घर जाके।